The client can buy back this plant from us at only 1 rupees. The billing cycle over here is as simple as the client pays to the discom. So with zero investment, he is saving 75% of his electricity bill. Hello everyone, this is Akshay working as a project manager at Alligator Automations Private Limited. Today we are covering 300 kilowatt peak solar plant at Wagoli, which is we have done for warehouse. यहाँ पे हमने 540 watt peak solar models इंस्टॉल किए हैं जो मोनो क्रिस्टलाइन है और 586 मॉडल्स ये रूफ पे हमने इंस्टॉल किए हैं। इसका आउटपुट जो है वो 300 किलोवाट डीसी होता है। इसका जो वारंटी है वो 25 ईयर्स का है और ये मोनोक्रिस्टलाइन मॉडल्स होने की वजह से इसका एफिशिएंसी बाकी मॉडल्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम लैंडस्केप ब्रैकेट यूज़ किया है, उसका मिनिमम क्लियरेंस हमने 100 mm दिया है और उसको हमने फिक्सिंग रिवेटिंग से किया है। आप देख सकते हो रिवेटिंग के ऊपर यहाँ पे हमने सिलिकॉन सीलेंट डाला है और नीचे ईपीडीएम वॉशर है ताकि रूफ को कोई लीकेज ना हो। हियर वी हैव इंस्टॉल्ड एफआरपी वॉकवेज जो काफ़ी लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं और उसको कोई रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। वॉकवे इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिस्टड सपोर्ट दिया है और उसके ऊपर वॉकवे इंस्टॉल किया ताकि रूफ को लीकेज ना हो या डैमेज ना हो। केबल ट्रेस फॉर डीसी केबलिंग, जो हमारा स्ट्रिंग केबल होता है वो सब हमने ये केबल ट्रे में लेके आए हैं और वो अप टू इन्वर्टर जाता है। वो ये परफोरेटेड केबल ट्रे है और वो गैल्वनाइज भी है, तो जो इसका लाइफ होता है जितना अपना सोलर प्लांट होता है उसके हिसाब से अपने केबल ट्रे का लाइफ होता है। मेन यूज़ तो ये है कि वो प्रॉपरली हम केबल लेके जा सकते हैं और प्रोटेक्शन भी होता है, मतलब जो भी इंसेक्ट होते हैं, रैट्स होते हैं, वो डायरेक्टली केबल को डैमेज नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे डिटेल्स है जो हम लोग हमारे एसओपी की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि ये पाइप है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग किया है हम लोगों ने, तो हमने यहाँ पे पाइप यूज़ किया है। सो ये केबल जो है जितना हमारा प्रोजेक्ट का लाइफ है 25 ईयर्स, उतना ही अपना केबल्स मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग का केबल जो है उसका भी होना चाहिए। तो हमने ये छोटी छोटी डिटेल्स है जिसका ध्यान रखा है और उसको भी पाइप प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है पाइप के ज़रिए। सेफ्टी लाइन भी इंस्टॉल किया है, जब कोई मॉडल क्लीनिंग के लिए आएगा तो उसका जो सेफ्टी बेल्ट है वो इसमें फंसाएगा और उसके बाद काम करेगा। जनरली प्रोजेक्ट मेंटेनेंस के लिए काफ़ी सारे लोग रूट पे जाते हैं, तो हमने जो हमारा वॉकवे है उसके साइड में ही सेफ्टी लाइन इंस्टॉल किया है ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनका सेफ्टी का ख्याल रखे जाए। मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग के लिए हम लोगों ने एक अर्थिंग स्ट्रिप दिया है, उसका साइज़ 25 बाय 3 का है और ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब मॉड्यूल से कोई अर्थिंग का लीकेज होता है तो ये डायरेक्टली अर्थ हो जाता है। इरेडिएशन सेंसर एंड मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर, ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम प्लांट मेंटेनेंस करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो इरेडिएशन सेंसर जो है वो हमें जो सन रेज है वो कितना है वो दिखाता है और मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल का जो टेम्परेचर होता है वो मेजर करके हमें देता है। तो जो हमारा पीआर रहता है प्लांट का वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सोलर मेंटेनेंस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मॉड्यूल क्लीनिंग और उसके लिए हमने सेपरेट मॉड्यूल क्लीनिंग सिस्टम दिया है। यहाँ पे हमने एक बॉल वॉल लगाया है जो यहाँ के मॉड्यूल्स कवर करेगा। वैसे ही इंटरमीडिएट पॉइंट्स हमने दिए हैं ताकि पूरा प्लांट आसानी से क्लीन कर सकते हैं। Here we have installed 200 kilowatts inverter and 133 kilowatt inverter. As you can see,
We have connected 14 strings here, and we have given payrolling for that. So while maintenance, we will get to know where these models are located on the roof. We have used 35 square mm earthing cable for inverter earthing. As Sungrow suggests these parameters, use those components accordingly. And here we have installed AC cable up to AC/DB panel, which we have laid underground through the trench. It is of 3.5 core, 120 square mm. We have connected 14 strings here, and the same way we have installed inverter number 1. Total overloading of both inverters are same, and that is 30%. As you can see, this is 33 kilowatt inverter. We have connected 3 strings to it, and we have overloaded it 20%. For remote monitoring, we have used a communication device. For that, we have installed RS485 cable, and you can see the device here we have installed for that, which is of Sungrow only. We will get to know the parameters like DC voltage, AC voltage, current generation, and plant performance also. We have used cable trays for AC cabling also and DC cabling, and you can see the proper cable management has been done here. This is our USP. Here we have installed safety fencing, and we have provided canopy also, so sunlight will not directly fall on inverters. That will increase the efficiency of the inverters. AC combiner box of our system. We have provided 3 separate MCCB for 3 inverters, and as you can see, this is our solar generation meter. We will track our solar generation from here, and other parameters we can see here, like total current, voltage, and frequency of the system. Hello guys, this is Amir Kutsi from Alligator Solar. You have seen the technical details of the plant. Now I will be telling you the economics behind this plant. We work under various models like CAPEX, OPEX or BOOT, and the open access models. This plant was installed under the OPEX model. According to this model, what happens is we are the investors. So Alligator Solar will invest in your company. Under the OPEX model, the client has to invest zero amount to install this solar plant. The entire investment is done by us, that is Alligator Solar or the installer. So the first important point under the OPEX model is the client's credit rating. The client has to give only their credentials, like their credit rating or their financial background. What the financiers or what we see is how profitable is the client, or is the client profit making, or has it been loss making from last few years. So we need their annual turnover certificates, net worth, and or if they have done the credit rating either from ICRA or other CRISIL or other credit rating agencies, we can use those documents, and accordingly we can give a good deal to the client. If the client has good credit rating, then accordingly the BG that is required, the revolving BG which is needed from the client's end, may get reduced or may increase depending on the credit rating. Here in the case of this client, the plant is of 300 kilowatt peak. We have signed a power purchase agreement of 15 years with this client at a specific rate, at a rate that is feasible for the client as well as for us. Here the client has given us a revolving bank guarantee of 3 months. So whatever generation the plant will be making for 3 months, that much amount the client has to give us as a BG, as a guarantee. The billing cycle over here is as simple as the client pays to the DISCOM.
the client usually pays on the 10th or the 12th day of the month. We charge the bill on the 1st of every month, and similarly the client has to pay us how much ever consumption he does. We get that consumption from the inverter or at the meter location. We calculate that, and accordingly we bill the client for those units. Under this OPEX model, here this client used to pay 18 rupees per unit to the DISCOM. Here the DISCOM is MSEDCL. He used to pay 18 rupees, and now he is paying at a very lower price. The rate over here is approximately 25% of what he was paying to the MSEDCL. So the client is saving 75% of his electricity bill, and the client here is getting these benefits with zero investment. With zero investment and zero maintenance cost, because here we will invest in you, we will invest in the maintenance and operation and everything of the plant. So with zero investment, he is saving 75% of his electricity bill. So the commercial and industrial entities who are paying huge amount to the DISCOM as electricity bills can reduce the electricity bill by 75 to 50% with zero investment under this OPEX model. And after 15 years, that is termination of the power purchase agreement, the client will get this plant for free, or he will just have to pay me 1 rupees and buy back this plant. As per the power purchase agreement, the client has to keep paying us for at least 5 years. That is the lock-in period. So after 5 years, the client can buy back the plant from us at a specific rate that will be decided according to the tenure table that we will be giving in the power purchase agreement. But after 15 years, that is termination of the power purchase agreement, the client can buy back this plant from us at only 1 rupees. So look no further, and if you want to save your electricity bill, come to us, contact us at the given link and the given contact number, or visit us on our website www.alligatorsolar.com. Thank you. If you have any requirement of any commercial, residential and industrial solar plant, click on the link given in the description.